Okay. Again, today I have to discuss on organic spectroscopy. Okay. For CSIR net, upcoming CSIR net that should be held on July last week, I think. So there must be organic spectroscopy is very vital one to understand for PYQ, because there must be no so much time is there for wholly discuss all the spectroscopy classes. So I have to take PYQs, and then next I will obviously after PYQ I will start with spectroscopy also. Okay. So first one I have to tell about that. In spectroscopy, organic spectroscopy, there must be three. The most important things are, first one, obviously remember, NMR is most important. 1 each NMR and 13 carbon NMR. Okay, because there must be so many questions that should become 4 or 2 marks question, and there must be, you have to given, there must be in question the datas are given, that is 1H NMR delta value, chemical shift value, and 13 carbon even chemical shift value. You have to predict which one the structure. So this is, most of the people never do that, because there must be high chance to get the wrong answer. Okay, so this is very important. After NMR, there must be important IR stretching frequency. There may be the question asked, that is so many compounds are given and you have to arrange in a ascending or descending order, or you have to matching the stretching frequency of respective compounds. That type of question may be asked. Okay. And next one, important UV. In UV there must be not the compound base value that more or less come or not always come, that is base value and the alkyl increment value that should be added. Their lambda max, determination of lambda max, not so much come, but the theoretical question that always come, that is Bathycombe shaped, hypsocombe shaped, blue shift, when in polar medium, how the shift can be there, pi to pi star, into pi star, that type of question that should become, which are basically theoretical based. Okay. And last one, which are important, little bit of important, that is mass spectrometry. Okay, in mass spectrometry there must be question may be asked, that is which group will be break fast. Okay, maybe sometimes asked, that is the metastable. Okay, metastable ion cation. This type of question may be asked. Sometimes may be asked, that is which type of compound. The compound is given, their molecular weight is given. You have, there must be so many these values are found. So there must be, you have to maybe identify which one the actual compound. So this type of question may be more or less come, but mass spectrometry there must be frequent question that should become. You have to most focus on NMR, that is mostly 1H NMR, and then 13 carbon NMR, and then you have to focus on IR value, especially for stretching frequencies, and then you have to follow UV, the theoretical background, and last one mass spectrometry. Okay. एंड द अदर जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, लाइक एज फॉर एग्जांपल इन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्पॉर्टेंट IR, microwave, radio wave, not important, radio wave that should be basically for NMR. So in physical spectroscopy important, that is electronic spectroscopy, which are called UV visible, microwave, okay, IR, obviously rotational spectra, vibrational spectra, electronic spectra, that are important. Okay. Okay. Then in inorganic spectroscopy, that is important, mass power spectroscopy important, and EPR or ESR spectra, that is important. Okay. So now we have to start with organic spectroscopy. The first question is, okay, the order of stretching frequency in the IR spectra. Okay, in ketone, amide and anhydride. Remember that ketone means COO, मतलब क्या होता है आपका कार्बोनिल,
and there must be 2 alkyl group is present. Maybe these 2 alkyl group may be same, may be different, so this is called ketone. Okay, जैसे आपका एग्जाम्पल होता है एसीटोन. ओके, नेक्स्ट वन amide. Amide like RCONH2, that is called amide. Okay, NH2 are called as amide. Then anhydride. Anhydride means that is COOR, that is called anhydride. Okay, so anhydride, that is RCOOCOR, that is called anhydride. Amide RCONH2, and then ketone RCOR. Okay, so always remember, there must be, you have to remember some basic value for IR stretching frequency, which are, okay, the space are there or no space I given. Okay, there must always remember for ketone, aldehyde and acid having the value 170. ओके, इसको क्या बोलता है 1700 टू ऑलमोस्ट 1725, ऐसा ही होता है. 5 है, ठीक है, आप 25 याद रखना, और सेंटीमीटर इनवर्स में होता है. ठीक है, आपका कीटोन, एल्डिहाइड एंड एसिड, their IR values more or less from 1700 to 1725 centimeter inverse. Okay, this range is for ketone, aldehyde and acid. Okay, if you have to consider amide, that is RCONH2, the range almost goes to 1600 to 1650. Okay, centimeter inverse. Okay, amide, that should be goes to 1600 to 1650. Mostly that should be near of 1600. Okay, but if there is electron, suppose in amide, if there is not any alkyl group is present, suppose there must be alkyl group attached with strong minus I effect group, electrojoint group, so there may be some IR values maybe goes to higher range. Okay, the value that should be increases. Okay, when any electrojoint group present, there must be new value or stretching frequency value that should be increases. Okay, and last one, when you have to consider anhydride, anhydride value always 1735 to 1750. Okay, 1735 to 1750 the range. Okay, but for cyclo, when this is present as a cyclo, this is called cyclic anhydride. Okay, I think this is called lactone. Okay, so this is value is 1770 centimeter inverse. This is the experimental value. Okay, you can take screenshot also, because there must be, I not given any page. Then if I given this page, any vacant page, I will write all this in a very beautiful manner. Okay, but by mistake next day I will make a one vacant page, that is where no written things are there, and then I will give all the rough copy as a written. Okay, and that will be beneficial to you. Okay, next okay, this is okay. Now always remember, when this is acid chloride, COCl is there, so the value range 1800 centimeter inverse, 1800 to 1810, 1820, that type. And when CO fluoride is there, that is very much high, 1800, there may be 1800 से more होता है. Okay, 30 ऐसा होता है, तो मुझे याद नहीं है, पर याद रखना एसिड फ्लोराइड से एसिड फ्लोराइड का न्यू वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, ओके, तो आई विल टेल दैट. ओके, बट किस वजह के लिए होता है? आपका कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड जो होता है वो, उसको आप नॉर्मल रख दो कि वो 1700 है,
Suppose the keto group, aldehyde group और acid group, उसका नॉर्मल रख दो 1700 की आसपास में होता है, ठीक है। अब तुम सोचो जब आप एमीन को देखोगे, एमीन क्या होता है, एमीन का जो नाइट्रोजन लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन is more than electronegativity of less than electronegativity of oxygen, right? Oxygen is much more electronegative than nitrogen, so that's why donor ability of nitrogen that should be greater than oxygen. आपका जो जिसका इलेक्ट्रोविटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लोन पेयर बोलो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो, वो खुद के पास ज़्यादा रखना चाहता है, ठीक है। और जिसकी इलेक्ट्रोविटी कम होता है वो दे देना चाहता है, ठीक है। सोचो आप मैं बोलती हूँ, मैं जब प्रैक्टिकल करती थी केमिस्ट्री में, तो ऐसा होता था, कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है कार्बोनिल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, डबल बॉन्ड था, वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है देन सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने पर फ्रीक्वेंसी या फिर आपका जो वाइब्रेशन वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा, समझा। इसलिए आपका एमाइड में आपका क्या होता है 1600 या लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है, अच्छा बात है। तो एनहाइड्राइड में क्यों ज़्यादा होता है, वाई दिस इज सो, एनहाइड्राइड में आपका ज़्यादा होता है क्योंकि आपका सोचो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है डबल बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर होगा वो कभी भी किसी भी कार्बोनिल में जाएगा। अगर इस कार्बोनिल में जाए तो ए वाला कार्बोनिल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब क्या होता है, इसका लोन पेयर अगर इस कार्बोनिल में जाए तो ए कार्बोनिल कैसा बिहेव करेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बिहेव करेगा, और जितना लोन पेयर यहाँ पर जाएगा उतना ही ए स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो क्या होता है कार्बोनिल एनहाइड्राइड में दो कार्बोनिल होता है, अगर एक कार्बोनिल में ऑक्सीजन लोन पेयर दे दे तो दूसरा कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें तो कोई भी लोन पेयर देने वाला नहीं है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यही बात है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, एनहाइड्राइड मोर फ्रीक्वेंसी देन ketone and then amide. Okay. Next question, that is in the mass spectrum of the compound given below during alpha cleavage. Alpha cleavage मतलब क्या होता है, सोचो आपका OH फंक्शन ग्रुप है, उसके पास वाले में जो चीज़ रहेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा क्लीवेज, ठीक है, अल्फा बोलते हैं। सोचो यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप COOH है, वहाँ पर इस जगह में जो ग्रुप रहेगा उसको बोलेगा अल्फा, सॉरी इस जगह में नहीं, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ जो रहेगा वो उसको बोलेंगे अल्फ़ा, नहीं इसको बोलेगा अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बीटा, ऐसे बोलता है, ठीक है। फिर भी रेक्टिफाई कर लेना अगर मेरे बात में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं कभी कभी सबसे बेसिक चीज़ होता है ना, गड़बड़ हो जाता है मेरा, डिफ़िकल्ट चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि होता है मेरे ऐसा होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ में अगर मैं घुस जाऊँ तो ईजी चीज़ उस टाइम मेरा दिमाग से आउट हो जाता है। तो ये बात आता है, जब भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री आप पढ़ोगे देखोगे सबसे बिगर वाला ग्रुप पहले लीव करेगा, पहले चला जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके स्मॉल ग्रुप चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है ऐसा कंपाउंड अगर दे दे जहाँ पर आपका कोई भी स्टेबल कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा, आपका ऐसा ही सब अल्काइल चेन है, तो तब आप सिर्फ देखो कि कौन सा बल्कि ग्रुप ज़्यादा है वो पहले बाहर आएगा, जो दूसरा है ये दूसरा बाहर आएगा, और ये तो तीसरा है मिथाइल, ये तीसरे में बाहर आएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बल्कि ग्रुप फर्स्ट लीव, ओके। देन नेक्स्ट वन एज स्पेक्ट्रम ऑफ HD वुड शो, ओके। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्चुअली ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन कैसे स्प्लिट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ आई थिंक है, पर देख लेना कि हाइड्रोजन कैसे स्प्लिट करता है। तो याद रखना यहाँ पर हम कैसे रूल यूज़ करते हैं, 2Ni + 1,
ओके। फॉर हाइड्रोजन केसेस में अगर बोलो, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन यहाँ पर आस्क किया, क्योंकि आंसर की तो डी दिया है, तो यहाँ पर आई थिंक हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोले तो आपको क्या पकड़ना है, ड्यूटेरियम को पकड़ना है। आपको कौन सा चीज़ आपको पकड़ना है, ड्यूटेरियम को। तो याद रखना, फॉर ड्यूटेरियम आई इज़ 1 and you have to put this value I, and n is the number of nuclei, that is only deuterium is present and only one nuclei. For each of the deuterium, one nuclei present, right? So 2 into 1 into 1 plus 1, that is a 3, that is a triplet. And as always remember, this 1 is to 2 is to 1, this is a Pascal triangle ratio, okay, and that can be observed only when I equal to half. अगर आपका हाइड्रोजन के बारे में बोलता तो तब 1:2:1 होता, पर ये तो I equal to half नहीं है, I equal to 1 है. So Pascal triangle never be followed. Pascal triangle only be followed for the case of I equal to half. Okay, I equal to half, on that cases Pascal triangle that should be used. So this is the correct answer. Okay, next. In the IR spectrum, carbonyl absorption band for the following compound appears. Okay, remember that this is a 5-member anhydride, 5-member anhydride, and that should be the experimental value 1770 centimeter inverse. Okay, so option B is the correct answer. Okay, next. In the 1H NMR spectrum recorded at 293 Kelvin, an organic compound C3H7NO exhibits a signal at delta 7.81 proton singlet, 2.3 proton singlet, and 2.63 proton singlet, and the compound is. Okay, so remember that आपका जो ये 2.6 बोला, ये वैल्यू आपका OME नहीं हो सकता है, बिकॉज OME का वैल्यू हर वक्त 3 से कम 3 होगा. ओके, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकता है. ओके, OME ऑलवेज द वैल्यू 3 to 4 ppm. ओके, एंड दिस इज गिवन 2.6, so that never be OME. That never be OME. Okay, so there's high chance that should be ME. Okay, so there must be 2.8 and 2.6, दो value is given. Okay, so apparently you can say this is a C. You can apparently see, but this is not C. Remember that. This is not C. 7.8 value 1H for singlet. Okay, so this 7.8 value is not for NH. This 7 point value not for NH. Why? Because NH having broad range -9 to 40 ppm, and this is not we have to consider, because this broad range so many values can be possible. For that case, this NH equal to 7.8 you never have to be say correctly. Okay, so that's why the only option you have to check and check again. This DMF or dimethyl formaldehyde can be written as that way, and that can be only happen when the room temperature is there or high temperature is there. आपका जब टेम्परेचर हाई या रूम टेम्परेचर होगा तब भी आपका ये जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर कैसे ऐसे जाएगा और ऐसे डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. तब क्या होगा, इस मिथाइल के पास O नेगेटिव है, इस मिथाइल के पास हाइड्रोजन है, तो दोनों का इन्वायरमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए दो मिथाइल का अलग अलग डेल्टा वैल्यू दिखाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Option A is the correct answer. Okay, next one. Among the following compound that displays IR band to 2150 centimeter inverse. So remember this is option C, because there is always remember 2150, that can be only possible for azide. That also be possible for C triple bond C, but this C triple bond C is present in anywhere. कोई भी जगह में C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं है. C ट्रिपल बॉन्ड C का वैल्यू 2150 होता है. C ट्रिपल बॉन्ड N का वैल्यू 2250 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और एजाइड का भी 2150 होता है. ठीक है, तो C ऑप्शन इस तरह. आपको कुछ याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of chemical shift non-equivalent protons expected in 1H NMR spectrum of
पाइनिन. ओके. देखो यहाँ पर एक कायरल सेंटर है. और जब भी कोई कायरल सेंटर कहाँ पर है, हम दिखाते हैं. यहाँ पर एक कायरल सेंटर है. ठीक है. तो ये जो कायरल सेंटर है, आप देखना, इस कायरल सेंटर के वजह से आपका यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट. प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट. सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट. एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो दो रिफ्लेक्टेड फोटोन क्या होता, एक जैसा होता. अगर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता तो दो जो ऑपोजिट हाइड्रोजन्स होता वो सेम होता, सेम सिग्नल दिखाता, एक ही जैसा इक्विवेलेंट होता. इफ देयर आर एनी POS, if there was POS is present, so the two reflected photons give same signal. Okay. If center of symmetry is present, the opposite hydrogen give the same signal, right? But that is not so. There is no POS, there is no COS, and there is no axis of symmetry also there. If axis of symmetry is there, due to this axis of symmetry, some photons give same signal. Okay. But there is one chiral center. When chiral center present, there must be, and also there must be no axis of symmetry, no symmetry is present. So there all the photons give individual signal. Okay. No two photons are similar. Okay. But I don't say that is CST, these three photons of CST give not signal. CST always give a singlet, and CST always give a not singlet. CST always give the three hydrogen combined signal. ओके. आपका जहाँ पर भी आप देखोगे मिथाइल का तीनों हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल होगा. उसको छोड़कर आप पकड़ो कि मिथाइल छोड़कर आप सोचो कि वहाँ पर और जो हाइड्रोजन है सबका अलग अलग सिग्नल होगा. ओके. इंडिविजुअल सिग्नल दैट शुड बी फाउंड. ओके. मिथाइल दैट इज 1, this hydrogen 2, this hydrogen 3, this hydrogen 4, this hydrogen 5, 6, 7, 8, and this methyl 9, this methyl 10. So option D is the correct answer. Okay. Next. अगर आपका मेरा कोई बात अच्छा नहीं लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टेक सो मेनी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन थिंग्स. बिकॉज आप लोग क्या होते हैं, आप लोग को अगर हम केमिस्ट्री समझाए तो आप केमिस्ट्री के कुछ समझते नहीं हो. अगर ह्यूमन के लाइफ के साथ अगर कंबाइन करके मैं बोलूँ तभी आपको समझ में आता है. ऐसा होता है. ठीक है. ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव है हम लोग के केमिकल साइंस के जगह. तो इसलिए हम कभी कभी पकड़ के समझाने के लिए ह्यूमन लाइफ को लेकर बोलते हैं. पर ऐसा नहीं है कि नहीं है ऐसा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व फॉर ए कार्बोनिल ग्रुप इन द IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू. ओके. द फोर्स कॉन्ट्रास्ट ऑफ CO bond is large. The force constant of CO bond is small. There is no change in dipole moment for CO bond stretching, and the dipole moment change due to CO bond stretching is large. Okay. So remember that force constant never effect on CO bond stretching. CO intensity जो कार्बोनिल का बोला है, CO stretching frequency can be related to force constant, but intensity never be influenced by force constant. Intensity that should be followed by dipole moment. ओके. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आपका जो इंटेंसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट. व्हेन डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी आल्सो भी इंक्रीजेस. ओके. बट frequency that should be proportional to force constant, that should be proportional to bond strength, that should be proportional anti-proportional to bond length. Okay. Next. 9 question. That is, there must be this column A is given and you have to check which one the stretching frequency. Always remember this is the lower frequency because oxygen lone pair that should be given.
Their anhydride value obviously give the highest value, because if lone pair is engaged in that carbonyl, so this carbonyl stretching frequency genuinely increases. Okay, so this is goes to 1865. This is goes to low value. Okay, and last value that should be go this. Okay, you can, okay, this go this value. Okay, this go this value. Okay, this go this value. Okay, so option C is the correct answer. Okay, clear? Next. There must be so many 1H NMR data is there, and this type of question is very much important. Remember that. Okay. There must be देखो आपका यहाँ पर एक देखना बॉट, जब भी देखोगे बॉट 2H, अगर बॉट 1H होता तो वो OH होता, बॉट 2H दैट मीन्स NH2. तो NH2 कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट नहीं होता है. ओके, ठीक है, तो ये हमका काम का नहीं है. नेक्स्ट वन 3.80, 2.6 2.8 नहीं है, 3.80, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट टू गोज टू 4 ppm. एंड आई ऑलरेडी सेड OMe ग्रुप 3.0 to 4.0 ppm. ऑलवेज रिमेंबर कुछ चीज़ आप याद रखना, OCH2 जो होता है वो 3.5 से 4 तक जाता है, ठीक है. OCH3 सॉरी, और OCH2 जो जाता है वो आई थिंक 4 से 4.5 जैसे जाता है, ठीक है, याद रखना. तो आपका OMe ग्रुप ऑलवेज 3.5 और 3 से आपका 4 जाता है, मोस्टली 3.5 से 4 जाता है. तो 3.80 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4, दैट इज ऑब्वियसली दिस इज मोस्टली OMe, एंड दैट इज ए सिंगलेट. OMe also shows singlet and 3 hydrogen. Okay, so remember that there must be Me is present. This is not OMe, so option D is incorrect. First one. तो ये हमारा काम का आ गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. Now you have to see this J value, this 8.8J and 8.8J, they suggest orthocoupling, and they are aromatic ranges. All are 7 and approximately 7. Okay, so they are aromatic proton. And this 8.8, that is a orthocoupling. 2.J, that is basically meta coupling. And para 1.2 Hertz may be considered, may not be considered. ओके, आपका अगर फील्ड बहुत ज़्यादा हो तब भी आपका पैरा को दिया होता है, पैरा कंसिडर होता है, इसलिए पैरा ज़्यादातर कंसिडर नहीं होता है कि वो सबसे वीक है, ठीक है. तो आपका ऑर्थो 8.8 हर्ट्ज एंड मेटा 2.4 हर्ट्ज. तो यू हैव टू चेक आउट, देयर मस्ट बी 3 एरोमेटिक प्रोटॉन शुड बी देयर, एंड ऑब्वियसली देयर शुड बी 2 ऑर्थो splitting should be present and 2 meta splitting should be present. Okay, now remember, in that 3 hydrogen present, okay, there also 3 hydrogen is present, there are 4 hydrogen present, so this is not. Okay, option A incorrect. Now remember, this C is given in that way, that is there must be here one ortho, that is 8.8, and one meta, that is 2.6. किसका? इस प्रोटॉन का. 1 ऑर्थो 8.8 एंड 1 मेटा 2.4 है. ओके, इस हाइड्रोजन का सिर्फ ऑर्थो है, दैट इज 8.8 हर्ट्ज. ओके, इस हाइड्रोजन का सिर्फ ऑर्थो है, कोई मेटा क्या है मेटा भी है, तो 2.4 है. तो यहाँ से हम क्या जान सकते, 2 मेटा है और 3 ऑर्थो है, पर यहाँ पर 2 ऑर्थो और 2 मेटा दिया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. समझा? इस प्रोटॉन का, इस जो प्रोटॉन है इसका यहाँ पर एक ऑर्थो है, यहाँ पर एक ऑर्थो है, यहाँ पर एक मेटा है, तो 8.8 एंड 2.4 है, 2 हार्ट्ज दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन. और दूसरा जो प्रोटॉन है इसका 2 ऑर्थो है, तो 2 8.8 दिखाएगा. यहाँ पर एक ऑर्थो है, यहाँ पर एक ऑर्थो है, ठीक है.
ये जो हाइड्रोजन इसके पास एक ही ऑर्थो है तो एक ही 8.8 दिखाया था, इसका मतलब यहाँ पर कितना सारा ऑर्थो है, 1 2 4 ऑर्थो है एंड 2 मेटा है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 ऑर्थो 2 मेटा है। तो आप बी में देख लो, बी में क्या है, बी में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देख लो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर, यहाँ के पास एक ऑर्थो है 8.8 हर्ट्ज, यहाँ पर एक मेटा है 2.4 हर्ट्ज। ओके, 8.8 हर्ट्ज पर ऑर्थो, एक ऑर्थो है, एक मेटा है 2.4 हर्ट्ज। तो ये किसका है, बोलो किसका है, 8.8 एंड 2.8 ये वाला है। ठीक है, इसका जो प्रोटॉन है इसके पास सिर्फ मेटा है, सिर्फ मेटा है, तो ये 2.4 हर्ट्ज है। किसके पास है, ए वाला है, जिसके पास सिर्फ 2.4 हर्ट्ज है। अब इसके पास देखो, इसके पास सिर्फ ऑर्थो है, दैट इज 8.8 हर्ट्ज ओनली प्रेजेंट। देयर मस्ट बी ओनली ऑर्थो इज प्रेजेंट 8.8 हर्ट्ज, दैट इज दैट प्रोटॉन 8.8 हर्ट्ज। ऑल आर राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, option B is the correct answer. So there must be, this is a meta coupling, this is a ortho and meta coupling, and this is a ortho coupling. Okay, that button. Okay, so यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं. Thank you and please subscribe, like, share, comment, and if you have any problem you can ask me, and sorry if I give any mistake, any wrong saying, I am sorry. Okay, so thank you so much.